Good morning, student. Again, welcome in my YouTube class. Now, today again we will discuss about the linear equation in one variable. We have completed exercise 2.4. Today we will start exercise 2.5. And the topic of the linear equation in two variable. The today topic is reducing equation to the simplest form. किसी भी इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है. हाउ कैन वी रिड्यूस एनी इक्वेशन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म? प्लीज पे अटेंशन हियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हियर. We have to find the solve the linear equation. We have to find the value of x. How can we find the value of x in this equation? Let us start. Okay. For the first we check what is the variable. Variable is x. We arrange all the variable in the same side. Okay. Suppose for example x upon 2 is here. Here x by 3 is also a variable. So we transpose this x by 2 to the left side. Here is the sign is positive. If any number of any variable have no sign, then by default here is a positive sign is hidden. So here is a positive. After transpose, the sign should be changed. Positive sign should be into the negative, and negative side should convert into the positive. So the sign should be x upon 3 plus minus 1 upon 5 is equal to 1 upon 4. Here constant term is here. We again transpose this constant to the RHS. We should separate variable same side and constant same side. Again x by 2 minus x by 3 is equal to 1 upon 4. Here minus 1 upon 5 is the negative. After transpose it will be converted into the positive. It means 1 upon 5. We take the LCM for this LHS 3 into 2. We take the LCM like 2 into 3. 2 was that 2 and 3 is here. 3, 1 and 1. So 2 into 3 is 6. Right? When we solve it, we should divide 2 to 6. When we divide 2 to 6, we get 3. 2 3 is 6. अब इसका जो रिजल्ट 3 आया है, after dividing this denominator, what is the result? Result is 3. Then we multiply this 3 into the numerator. By default here is a 1 is a hidden. So 3 was a 3x minus 3 to the 2 times 2 into x 2x. Say we always take the LCM here. 5 4 the 20. We take the LCM, we get 20 is the LCM of the RCS. It is clear? So we take 4 5 the 5 times 5 1 the 5 plus 5 4 the 5. When we divide 20 by 5 we get 4 times. Then 4 1 the 4. Okay. 3x minus 2x is equal to x upon 6. ये 3 में से मिल जाएगा 1x होगा. 1 को हम लिखते नहीं है. 1 यहाँ पे आपका 1 हिडन होता है. 1 ये आपका 9 upon 20. It is clear? अब देखते हैं हमको we have to find the value of x. हमारे को बस x निकालना चाहिए. x का कुछ भी नहीं होना चाहिए. यहाँ डिवाइड में after transpose divide should be converted into the multiply. The value of x 9 upon 20 into 6. Right? Divide 2 से 2 3 is 6, 2 10 is 20. The value of x 6 9 to the 18. Okay, 9 into when we divide 2 we get 3. 9 into 3 upon 10. 3 is 27 upon 10. It is the final result of your question number first. It is clear? Then we can find the value of x by applying the these properties or this method. Okay? Same question number 2 is also here.
n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equal to 21. In this equation we have to find the value of n. Your variable n is here. In this question let us see all the variables are same side, so no need to transfer the any variable. Okay, if the all variable are same side, then we take the LCM of the denominator 2, 4 and 6. Suppose 2 1 2 3 2 1 1 3 3 1 1 and 1. Okay, 2 to the 4 4 to the 12. ये आपका एलसीएम हो गया 12. इट इज क्लियर. फिर से क्या करेंगे, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे. व्हेन वी डिवाइड 12 to 2 वी गेट 6. 6 का इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6. यहाँ पे अगर n के साथ कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो 6 बन जा 6 एंड माइनस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी रिड्यूस 3 टाइम्स. 4 3 जा 12, 3 का 3 3 जा 9 एंड प्लस 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 of n is equal to 21. राइट. अब चेक करते हैं, प्लस प्लस ऐड करते हैं 16 एंड माइनस का 9 एंड अपॉन में 12 इक्वल टू 21. 16 में से 9 जाएगा 7 एंड अपॉन में 12 इक्वल टू 21. ओके, फॉर द वैल्यू ऑफ n 21. हियर 12 is divided. After transpose it will be into the form of multiplication. 12 यहाँ डिवाइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका 7 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा. इट इज क्लियर. अभी चेक करते हैं 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा. 7 3 जा 21 और 12 into 3. The value of n is here. n is equal to 3 into 12 and 36. It is clear. The value of n is 36. Question number 3. You will try it same. Let us start question number 4. It is clear. Question number 4. It is clear. Okay. क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे किया वैसे 3 मैं आपको लेके छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करिएगा. ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ. ओके, नाउ द क्वेश्चन 4 इज हियर. x minus 5 upon में 3 is equal to x minus 3 x minus 5 upon 3 और x minus 3 upon में 5. ओके, अभी देखते हैं इस सबके होल में ना. अब इसको कैसे करते हैं, जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वी यूज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, इसका इससे यूज करते हैं. ये 5 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में. ओके, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में x minus 3. वी यूज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, वी यूज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर द सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन. 5 का x करेंगे 5 बन जा 5x 5 5 जा 25. राइट. 3 का x करेंगे 3 बन जा 3x 3 जा 9. अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे. वेरिएबल को एक साइड और कोएफिशिएंट कांस्टेंट को सेम साइड. यहाँ देखते हैं 5x है प्लस 3x इधर है तो माइनस का 3x. ओके, हम दो प्रोसेस सब करते हैं. इस 3x को यहाँ ले आते हैं, -25 को राइट ले जाते हैं, तो ये आपका -9 प्लस का 25. इट इज क्लियर. 5 में से 3 जाएगा 2 ऑफ x. ओके, अब 25 में से 9 ले रहते हैं. ठीक, ये आपका 6 होगा 16. ओके, 25 में से 9 जाएगा 16 जाएगा. This one is the greater and its sign is also positive, so we use the positive. The value of x 16 upon 2. इधर 2
into में था, after transpose it will be reduced into the division. 2 8 there 16, the value of x is equal to 8. Okay, it is the question number 4. Now let us start question number 6. 5 will you will try, na? It is the homework for you. Question number 6. In question number 6, the question number 6 is given m minus 1 upon में 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon में 3. In this equation we have find the value of m. Then what is the value of m? Let us start. Again we will try to solve. First we arrange all the variable into the same side. Like m is here, we transpose m on the left side. First one is the m minus 1 upon 2. This one minus, we use a bracket, minus m minus 2. After here is fraction is the negative. After transpose it will be positive. Right? And 1 is the here. We take the LCM 6. By default, if there is no any denominator, we take 1 as a denominator. Okay. 1 when we divide 1 to 6, it will be reduced at 6 times. 6 into m, 6m. 2 into 3 times 3 in bracket m minus 1 plus 3 2 times 2 in bracket m minus 2, the value of 1. Okay, we solve this. Okay, 6m here plus minus 3m. Here is a plus and minus, plus minus 3 1 the 3m, minus into minus, plus 3 1 the 3, plus 2m plus minus 2 to the 4 upon में 6. Okay, select 6 plus 2 8 होगा, पहले प्लस करके 6 plus 2 8m minus 3 is 5m. Okay, 6 plus 2 आपका 8 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1. But sign is the negative because the value is 4 is greater, so we use a negative sign. Okay, upon में 6 is here is 1. Is right? Then we try to solve the value of m. Okay, how can we find? Okay, here 6 is in the form of division. We transpose here 5m minus 1. 6 divide में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 into 6. ये 5m minus 1 is equal to 6 बन जाए 6, 5m 6 minus 1 here after transport it will be converted into the plus. The value of 5m is equal to 7. Then the value of m is equal to 7 upon 5. Because 5 is here in the form of the multiplication, after transpose the sign should be reduced into the form of the after transpose sign should be reduced, negative should be converted into positive, and 5 is here multiplication, after transpose it will be into the form of division. It is clear? Now question number 6 is here. Okay, so that's all for today. We will try the next question from 7 to 10 in our next lecture. Remaining question you will try. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice for everyone.